માણસ આ દેશમાં એક જ હતા. એ નીર નરની વાત સુણી કઈક ના પગ ધ્રુજતા. ના મળે એવું કોઈ પણ એના વિરોધી વાતનું. આ દેશનું એ ધન હતું, ગૌરવ હતું ગુજરાતનું. સદનો કર્મયોગી લાડપાનો લાડલો સપૂત ભારત માતનો સરદાર વલ્લભ આપણો. સરદાર વલ્લભ આપણો. હે રતન ભારતનું સદા નિશ્ચય અને નીડર હતું. છાતી સલામત રાખનારું લોહનું બખ્તર હતું. સાબરમતીના સંતનો સાચો હતો એ સારથી. હિંદનો એ લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભ આપણો. સરદાર વલ્લભ આપણો. એ હાક મારે ત્યાં વિરોધી ઘૂમતા કાપી જતા. એ દેશદ્રોહીને દિવસના તારલા દેખાડતા. ના મૂલ્ય કોઈ આંકી શકે એના જન્મની રાતનું. આ દેશનું એ ધન હતું, ગૌરવ હતું ગુજરાતનું. ગૌરવ હતું ગુજરાતનું. Teachers and all my dear friends. Today, I, Smita Patra and I, Zaya Mansoori from 8th Narmada heartily welcome you all to celebrate 146 Sardar Patel Jayanti. Sardar Vallabhbhai Patel is one of the prominent Indian barristers, politicians and leading figures of our country. He rose to prominence at the time of India's freedom movement. 1947 में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और भारत के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. वह वास्तव में भारत गणराज्य के संस्थापक नेताओं में से एक थे और राष्ट्र को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. Now, as our tradition in every good work, we always praise God and welcome them. Now, I invite our principal sir, Mr. Vaibhav Agrawal, for lighting of lamp and invoking God for this program. Principal sir to express himself in his own words. Thank you very much. First of all, to all the teachers, students who have arranged this program. As you know, today we are celebrating Rashtriya Ekta Divas. Why we are celebrating? Because the occasion of Sardar Vallabhbhai Patel birth anniversary. As they have told, Rashtriya Ekta Divas. Why his birthday is celebrated as a National Unity Day? What the reason? Why this name is given? Have you ever thought? The reason is
because he was a person who has united all the states in one nation when it's going to be distributed in different countries. Like you have heard, you may Google, first country, the condition is going to be like that way, USSR. USSR, उसको हम बोलते हैं सोवियत संघ, पहले बोलते थे। सोवियत संघ था एक, जैसे भारत देश। अब सोवियत संघ के 18 टुकड़े हो गए हैं और वो 18 कंट्रीज में बढ़ गए। उसमें एक रूस भी है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ट्यूशनिया हैं, ये सब। और पहले एक ही था। इसी तरह द सेम मैनर इट्स गोइंग टू बी हैपन इन इंडिया, कि जैसे गुजरात, ये भी एक देश है ना, और जितने भी स्टेट्स है, ऐसे छोटे छोटे देश में, रियासतों में ये बंटने वाला। Who has taken the initiative to unite them all? राष्ट्रीय एकता, इन सबको बोला, कोई अलग अलग स्टेट नहीं, कोई अलग अलग देश नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। He took the initiative and he is able to do unite all the riyasaton into a one country. That's why his birthday is celebrated as Rashtriya Ekta Divas. Please give a big hand. And it's a proud moment. We are having privilege. I am having a privilege to work in a place where Gandhi has born, Sardar Patel has born, है ना? Get my point? In childhood, still you are child, but you might be heard a story about a stick. A parent used to give a lesson to his 5 sons. They used to fight to each other and they are not able to get success. Once what he has done, he has given a stick to each and everyone and asked them to break it. Everybody is able to break it. And the same stick he has collected and made one bunch of 5 sticks. Then he asked to each and everyone, now just try to break it. So then nobody was able to break it. What the message, what the moral of the story is, if we are united, we are having more strength. That is the matter of strength. Unite, we can win. Divide, we can lose. Okay? The same manner, divide and rule. This was the policy of Britishers. So, Sardar Patel has worked for India to unite all the Riyasatain into one nation. That's why his birthday is celebrated as a Rashtriya Ekta Divas. If we will go through his life and his work, really we feel proud. We feel proud being an Indian. You people have the privilege, and I can say it's an opportunity to take birth in Gujarat, because we are also born in Gujarat. That's why Honorable Prime Minister has taken initiative to make an statue of unity. Please give a big hand for him. So, thank you very much to celebrate this National Unity Day, Rashtriya Ekta Divas, and you are having lots of program for today also. And as you know, we are celebrating National Unity Day, Rashtriya Ekta Divas, under the Azadi Ka 75वें Amrit Mahotsav. So, because Amrit Mahotsav, it's called Amrit Mahotsav. Okay? Once again, thank you very much. God bless you all.
Thank you very much, sir, for your beautiful words. Offer flowers to welcome Principal Sir. Good morning to all, respected principal sir, teachers, and high school mates. My name is Justin Matra, and I am a student of class 7. Today we have gathered here on the occasion of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. This is a special and rare occasion when we celebrate two causes. Firstly, it is the birthday of Sardar Patel, the Iron Man of India. And secondly, we celebrate the integrity of India as Sardar Patel envisioned. As we all know, that the Sardar Patel was a freedom fighter who later became a first Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India. It is actually a small fraction of the huge personality of the man. Sardar Patel's most popular and acclaimed work is his follow for a small state to accept India's dominance. He unambiguously wanted a united India. He therefore worked tirelessly to make princely state accept India's dominance. Even if he displayed ignorance, he treated him with military power. Hence, his birth anniversary is celebrated with incredible zeal and enthusiasm throughout the country. It is not only his birthday that we celebrate, but also his unity. That is why it is also celebrated as a National Unity Day. For those who do not know, I would like to add that in 2014, National Interrogation Day was started by the Government of India to appreciate the efforts of Sardar Patel in United India. His birth anniversary is celebrated in schools, college, and all government offices. In a way, remembering Sardar Patel's contribution to the freedom struggle and the integration of post-independent India. I hope you all know that the special program on Sardar Patel Jayanti are organized at the Statue of Unity in Kevadia, Gujarat. Many programs are organized at the Statue of Unity in which the local population, tourists, and all government officials and politicians take part. Along with the birth anniversary of Sardar Patel, Run for Unity is also organized at the various places across India to celebrate the cultural and religious unity of the nation. The race is usually in the form of marathon involving participants from the various sectors of the society. I would like to add further that the Run for Unity reminds of Sardar Patel's commitment to a national unity and compromises. I request all of you to celebrate this Sardar Patel Jayanti with extraordinary zeal and enthusiasm, and also remember the great effort and the individual in keeping India independent, progressive, and united. Sardar Patel Jayanti will be celebrated with the same enthusiasm and respect until the man and his determination are respected. He was not only an experienced freedom fighter and a close associate of Mahatma Gandhi, but also a shrewd political visionary. With this, I want to conclude my speech on Sardar Patel Jayanti and thank you all for being such a patient listener. I once again request all of you to celebrate this day and pay tribute to the Iron Man of India. Jai Hind. मैं ओज पांडे से बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कुछ शब्द हिंदी में बताने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं ओज पांडे आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब आप सबके सम्मुख अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा नमन सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, जिनके जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल को हम मुख्यतः उनके उस महान कार्य के लिए याद करते हैं जिसकी वजह से आज हम बिना वीजा एवं पासपोर्ट के हिमालय की कड़कड़ाती ठंड, थार की गर्मी और उत्तर पूर्व की वादियों में और कन्याकुमारी के सागरों तट पे लहराती लहरों पर के लुत्फ ले सकते हैं। पर ये तो सिर्फ आजादी के बाद के कार्य हैं। सरदार पटेल के कार्य योगदान सिर्फ आजादी के बाद ही नहीं, उसके पूर्व भी है। उसमें से प्रमुख है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह 1928 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने
किसानों की लगान वृद्धि को 30% तक बढ़ा दिया था। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जमकर विरोध किया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया, परंतु उनको किसानों की बात माननी ही पड़ी और लगान वृद्धि को गलत मानते हुए उन्हें 6.03 किया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया ओज। अभी मैं आपको अपने देश की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारे लोखंडी पुरुष से जाने जाने वाले महापुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत की थी। अनेकता में एकता ही असली पहचान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाए महान। विविधता में एकता ही भारत देश की पहचान है, इसलिए हमारा भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। एकता के बल पर ही हमारे देश में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के शासन को खत्म करने में विजय पाई। भारत में जाति, धर्म, पहनावा, बोली, संस्कृति, रीति और परंपरा में काफी विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश की एकता की मिसाल दी जाती है। इसलिए इस पहचान को बरकरार रखने के लिए और देश की राष्ट्रीय एकता को सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की नींव का पक्का करने के साथ राष्ट्र को के सभी राज्यों की संस्कृति को समझने और आपसी संबंधों की और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास में मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की। अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। હવે હું રોહન સોલંકીને વિનંતી કરીશ કે તે પોતાનો પરિચય ગુજરાતીમાં આપે। શુભ સવાર, હું રોહન સોલંકી, ધોરણ 7, નર્મદા, રોલ નંબર 21, સ્કૂલ ભારતીય વિદ્યા ભવન CFCL એકેડમીમાંથી આજે તમારી સામે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે થોડું ઘણું જણાવીશ। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક અજોડ પ્રતિભા હતા। લોકલાડીલા અને આઝાદી માટે તેમને અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જેમને લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેમનો જન્મ ગુજરાતના બારડોલીમાં એક સામાન્ય ખેડૂતના ઘરમાં 31 ઓક્ટોબર 1875માં થયો હતો। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ખેડૂતો પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો, તેથી તેમણે ખેડૂતો જોડે મળીને બારડોલી સત્યાગ્રહ લડ્યો હતો। તેથી ગાંધીજીએ તેમને સરદારનો બિરુદ આપ્યો હતો। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે તેમનું શિક્ષણ ગુજરાતીમાં જ લીધું હતું। 1910માં વકીલાત માટે તે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા। 1913માં વકીલાતની પદવી મળ્યા બાદ તે ભારત પાછા આવ્યા હતા। ભારત પાછા આવ્યા બાદ તે ગાંધીજીથી પ્રભાવિત થઈને તેમની સાથે આઝાદીની ચળવળમાં જોડાઈ ગયા હતા। તેમની મૃત્યુ 1950માં ડિસેમ્બરમાં બોમ્બેમાં થઈ હતી। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ભારતીય રાજકારણી અને સ્વતંત્રતા કાર્યકર શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રચંડ પ્રતિમા છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આખા વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, જેની ઊંચાઈ 182 મીટર છે। તે ભારતના ગુજરાતના કેવડિયા વસાહતમાં નર્મદા નદી પર સ્થિત છે। આભાર। थैंक यू रोहन। आता मी निलेश पाटील यांना मराठी ओळख करून देण्यासाठी आमंत्रित करतो। नमस्ते, माझं नाव निलेश पाटील आहे। मी 7वी वर्गात आहे। माझ्या शाळेचं नाव भारतीय विद्या भवन CFCL अकॅडमी आहे। मी आज मराठी स्पीच बोलते। मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्या माझा हा महाराष्ट्र देशा। 1 मे 1960ला महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, तर यापूर्वीच्या महाराष्ट्राला मोठा इतिहास लाभला होता। महाराष्ट्र म्हणजे महान राष्ट्र, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक व महान योद्धा छत्रपती शिवाजी दलितांचे कैवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, स्त्री शिक्षणाचे जनक सावित्रीबाई फुले, स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते ज्योतिबा फुले, मताचे
भारताचे प्रवर्तक लोकमान्य टिळक स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशी अनेक अनमोल रत्ने याच मातीत जन्माला आली. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यासारख्या ज्ञानी संतांनी सुद्धा इथे जन्म घेतला. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, क्रिकेटचे सचिन तेंडुलकर, विक्रमादित्य, सुनील गावस्कर, भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके, स्वर सम्राट पंडित भीमसेन जोशी व आगळी समाजकार्य करणारे बाबा आंबेड इत्यादी सर्वांच्या माझा सार्थ अभिमान आहे. त्यांनी आपल्या शौर्याने कर्तव्याने महाराष्ट्राचे नाव जगात अजरामर केले. मराठी भाषा महाराष्ट्राची समृद्ध भाषा मायबोली आहे. गणेश चतुर्थी हा महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण सण आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रात 10 दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. अशा हा महाराष्ट्र, सुंदर महाराष्ट्र मला अत्यंत प्रिय आहे. प्रिय आमचा एक महाराष्ट्र देश हा. जय महाराष्ट्र. నా పేరు నవీన్. నా పాఠశాల పేరు భారతీయ విద్యా భవన్ జేటీసీఎల్ అకాడమీ. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాతృభాష తెలుగు. ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ భారతంలో ఉన్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 28,173 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త ఏప్రిల్లో వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధ మందిరం కనక దుర్గా మందిరం విజయవాడలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం టిఫిన్ పెసరట్టు ఉప్మా. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం కూర గుత్తి వంకాయ కూర. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం స్వీట్ పూతరేకులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం బట్టలు ధోతి మరియు కుర్తా. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం బీచ్ రామాచన బీచ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రసిద్ధం నగరం విశాఖపట్నం. దేశాల్లో పండించే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వతంత్రత సయోధులు అల్లూరి సీతారామరాజు, ఉయ్యాల నరసింహారెడ్డి, గుప్తి బ్రహ్మ ఇంకా మరెన్నో. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు. ఇతను భారతదేశపు బలమైన మరియు శక్తివంతమైన సార్థిక సమయోధులుగా గుర్తించబడ్డారు. ధన్యవాదాలు. নমস্কার, আমার নাম অজিত ভট্টাচার্য। ভারতের একটি রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। আমি এই রাজ্যের বাসিন্দা। আমি বাঙালি। আমার মাতৃভাষা বাংলা। বাংলার মাটি অনেক সে জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন নোবেল দিয়েছেন তেমন দিয়েছেন জাতীয় সঙ্গীত। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বাড়ি, বাংলার ফল। আমাদের প্রধান উৎসব দুর্গা পুজো। আমাদের প্রধান মিষ্টি রসগোল্লা। ধন্য বাঙালির জন্য। നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധ നായ. ഞാൻ സീനിയർ KG വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ കുറച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനാണ്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഒക്ടോബർ 31 നടിയാർ, ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു. സർദാറിന്റെ അച്ഛൻ ജാവേർഭായ് പട്ടേൽ, സർദാറിന്റെ അമ്മ ലാഡ്ഭായ് പട്ടേൽ. സർദാറിന്റെ ജന്മദിനം രാഷ്ട്രീയ ദിവസം ആചരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി കബാഡിയ ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. जोहार, मैं क्षितिज मंडल कक्षा 8 तापी के छात्र आप मन ला छत्तीसगढ़ राज्य ला रोचक जानकारी बतावत हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के बीचों बीच में हवे। एमा बहुते घना जंगल हवे और ए मंदिर व सुघर झरना भर जाने जाते। आ राज्य में 36 किला हवे। किला ला गढ़ भी कहत है। एहिच भर एकर नाम छत्तीसगढ़ पड़िस है। पहले ए मध्य प्रदेश कर हिस्सा रहिस।
1 નવેમ્બર 2000 માં એ ભારતला 23वां राज्य बनी से। हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ कर मुख्य भाषा हवे। ए राज्य में बहुत प्रकार के जनजाति रहते। एकर जनसंख्या 50% से अधिक है। भारत के नियाग्रा, चित्रकूट झरना, अमृतधारा झरना, हिल स्टेशन मैनपाट, कर्मानाच, पंडवानी और कोसासिल भारत में बहुते ज प्रसिद्ध हवे। अंत में सब देशवासीला आग्रह करत हूँ कि देश के ई अतुलनीय राज्य में घूमे भर जरूर अइहा। काबर के छत्तीसगढ़ नहीं देखे तो का देखे। राम राम। अब मैं हमारे आचार्य श्री वैभव अग्रवाल जी को अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठ से संकल्प करता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी नीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। On behalf of GITCL Academy, I extend my sincere thanks to our principal sir, Mr. Vaibhav Agrawal, for his contact support and guidance in celebrating this program. Thank you, sir. I would like to thank all my students, those who have participated in activities related to the program. How can I forget to all the students for your kind support? Last but not the least, I thank the computer teachers, Yogesh sir and Samipa ma'am, for preparing the slides and video clips. Thank you. સરદાર બસ આદેશમાં એક જ હતા એ નીર નરની વાત સુણી કઈક ના પગ ધ્રુજતા ના મળે એવું કોઈ પણ એના વિરોધી વાતનું આદેશનું એ ધન હતું ગૌરવ હતું ગુજરાતનું Naveen Reddy, right? Thank you.